Hello everyone, welcome back. Today we discuss about the stress and strain. Now first we come to know that what is stress. In technical language, when any body is subjected to external loading, then elements from body will try to oppose that force, that is internal resistance offered by elements from body is known as stress. ये तो हो गया टेक्निकल लैंग्वेज में, बट इन सिंपल वेज वी कैन ऑल्सो डिफाइन दैट रेसिस्टिंग फोर्स, दैट इज रेसिस्टिंग फोर्स per unit area within elastic limit is known as stress. We will define in both languages. First, we will define in technical language, but in simple way, it is the resisting force per unit area within elastic limit is known as stress. Now, it is denoted by sigma. Stress is always denoted by sigma, and resisting force, its formula is resisting force upon area. It is also described as the stress is the ratio of resisting force upon area. Then resisting force is R and area is A. We will also describe that there is a body which is subjected to external load P from both sides. Then it will try to oppose the force. Then after that, body goes to be deformed like that, in which R resistance is formed. Then we can easily say that R equals to P, that is R equals to P, that sigma is equals to P upon A. Now the next point is that what is the unit of stress. That we can know that the unit of stress depend upon the unit of load or unit of area. अब एम के एस यूनिट में क्या होता है, एम के एस यूनिट में जो यूनिट ऑफ स्ट्रेस होगा वो होगा, अब जैसे कि जानते हैं हम कि फोर्स क्या है, फोर्स एक्सप्रेस्ड होता है केजीएफ में, एंड एरिया इन मीटर स्क्वायर. Then in MKS unit the stress is kgf per meter square. But if the area is expressed in centimeter square, then it can also be written as kgf per centimeter square. Now in SI unit, the force is expressed in Newton.
and area is expressed in meter square. Meter square. Then in this, the SI unit is Newton per meter square or Newton per mm square. We can also tell that 1 Newton per meter square is equals to 1 Pascal. After the definition and SI unit, the next things come, that is classification. That is classification. According to classification, stress is divided into two categories. फर्स्ट इज़ नॉर्मल स्ट्रेस एंड सेकेंड इज़ शियर स्ट्रेस. तो नॉर्मल स्ट्रेस में दो तरह के से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्ट्रेस. अब डायरेक्ट में क्या होता है कि फर्स्ट तो नॉर्मल स्ट्रेस वह स्ट्रेस होता है जिसमें नॉर्मल क्रॉस सेक्शन में जो लोड मेंबर्स होते हैं, लोड मेंबर्स की वजह से जो लोड एक्ट होता है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होता है. ठीक है. अब ये या तो टेंसाइल हो सकता है या कंप्रेसिव हो सकता है. अगर हम टेंसाइल लोड अप्लाई करेंगे तो ये टेंसाइल होगा, अगर हम कंप्रेसिव लोड अप्लाई करेंगे तो कंप्रेसिव होगा. तो नॉर्मल स्ट्रेस को हम डिफाइन कर सकते हैं, या इसका फॉर्मूला है सिग्मा एन इक्वल्स टू रेसिस्टिंग लोड अपॉन एरिया. इसकी यूनिट भी होगी हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नाउ द सेकेंड इज दैट कि इनडायरेक्ट लोड क्या होता है. तो इनडायरेक्ट स्ट्रेस में क्या होगा कि बेंडिंग अपॉन फ्लेक्सुरल स्ट्रेस होगा. बेंडिंग अपॉन फ्लेक्सुरल मतलब कि फोर्स इक्वल्स टू एम अपॉन जेड. एम जो है यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, और जेड जो है वो हो जाएगा हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेस. वहीं अगर हम शियर स्ट्रेस की बात करें तो शियर स्ट्रेस क्या होता है कि शियर स्ट्रेस भी दो तरीके से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अब डायरेक्ट में होता है टेंजेंशियल फोर्स, दैट इज टाउ इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए. टेंजेंशियल फोर्स अब शियर स्ट्रेस क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके. अब या तो ये शियर स्ट्रेस जो है वो डेवलप होता है लोड, अगर लोडेड मेंबर या फिर शियर फोर्स के अकॉर्डिंग. ये टिल्ट करता है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो टिल्ट करता है, और ये डिफाइन होता है टाउ इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, जो इसका फॉर्मूला है. दैट मीन्स टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया. Now the next thing is what is strain. स्ट्रेस के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया. अब अगली चीज़ है कि स्ट्रेन क्या है. तो स्ट्रेन जो है वो डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया. अगर दूसरे लैंग्वेज में बोलें तो ये रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ
change in dimension to the original dimension is known as strain. जैसा कि हमने देखा था स्ट्रेस की SI यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर, पर ये जो है ये यूनिट लेस है. इट इज़ यूनिट लेस. इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से. इसका फार्मूला हो जाता है इससे एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू और स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. इसे हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू समझ सकते हैं that there is a body or there is a object. When we applied compressive load P, then there some changes occurs in the body or the body gets deformed. Then the changes occurs due to the applied load is del L. Then stress equals to change in dimension del L upon original dimension L. There are various types of strain. First is tensile strain. Second is compressive strain. Volumetric strain. And last one is shear strain. Now टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है, उसकी वजह से जो भी लेंथ इंक्रीज होती है, क्योंकि जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो लेंथ इंक्रीज होगी. तो जो रेशियो होगा इंक्रीज ऑफ लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ वो कहलाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ. लेकिन अगर लेंथ ऑफ बॉडी जो है वो डिक्रीज होती है तो उसका जो रेशियो होगा वो होगा डिक्रीज ऑफ लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो कि कहलाएगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन. Now third is volumetric strain. जो भी चेंज ऑफ वॉल्यूम रेशियो जो रेशियो होगा चेंज ऑफ वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम बॉडी का वो कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. और शियर स्ट्रेन वो स्ट्रेन है जो कि प्रोड्यूस्ड होगा शियर स्ट्रेस से. सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है स्ट्रेस के बगैर.
That means strain cannot exist without stress. Now the next term comes, that is Hooke's law. Hooke's law. Now what is the Hooke's law? So according to Hooke's law, when the material is loaded within elastic limit, the stress induced in the material is directly proportional to the strain produced. It means that the ratio of stress with the corresponding strain give us a constant within elastic limit. It is the technical definition. That is, the stress is directly proportional to strain within elastic limit. Mathematically, stress is directly proportional to strain. That is, stress equals to there E is the elastic constant or modulus of rigidity. With the help of this term, we can also define Young modulus or modulus of rigidity. We can say that it is the ratio of stress to the strain. That is E equals to stress upon strain. Now we know that stress equals to P upon A, that is resisting force upon area, and strain is equals to change in dimension upon total dimension. That is E equals to P upon A Here we assume that dimension is in length. Then it can del L upon L. Which is equals to PL upon del L into A. From there we find change in length. Change in length formula is PL upon AE. From the Young modulus or modulus of rigidity, we also come to know the formula of change in length. It is the formula of change in length. In the next video, we will discuss about the numericals of Hooke's law, stress and strain, and Young modulus. Thank you.